जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल शिल प्रभुपाद की जय शिल प्रभुपाद गुरु पूजा की जय चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान मते वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादी भाई ए भवतरिया जाय जहर प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते कृष्ण प्राप्ति है ते पद्मा वाक्य चिते ते करिया क्या गुरुमुख पद्मा वाक्य
चिते ते करिया क्या क्या आराधना करिया माने आशा आराधना करिया माने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति प्रसादे पुरे सर्व आशा ये प्रसादे पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिल ये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिल ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाशयन्ते ते प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाशयन्ते प्रेम भक्ति जायते अविद्या विनाशयन्ते वेद गाय जार चरितम् वेद गाय जार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकना लोकेरा जीवना लोकना लोकेरा जीवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना हाँ प्रभु करो दया दे हमारे पाद छाया या प्रभु करो दया दे हमारे पाद छाया हाँ प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया हाँ प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया
Ebe Adishu Tribhuvana Ebe Adishu Tribhuvana Srila Prabhupada Patita Pavana Srila Prabhupada Patita Pavana Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Shri Prabhupada ki jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachata Deshatarine Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए, सब लोग बोलिए, जितने भी भक्त हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ઉદિલરુણાપુર ભાગે દ્વિજમણી ગૌરામી ન જાગે ઉદિલરુણાપુર ભાગે દ્વિજમણી ગૌરામી ન જાગે ભક્ત સમૂહ લૈયા સાથે ગેલા નગર બ્રાજે હે ભક્ત સમૂહ લૈયા સાથે ગેલા નગર બ્રાજે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે તાથઈ બાજાર ખોલ ધન ધન તાઈ ઝાંઝર રોલ હરિ બોલ ઓલ તાથઈ બાજાર ખોલ ધન ધન તાઈ ઝાંઝર રોલ પ્રેમે ઢલા ઢલા સોના રંગે ચરણની પુર બાજે પ્રેમે ઢલા ઢલા સોના રંગે ચરણની પુર બાજે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए बोलिए सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। राधे 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 गोविंद राधे राधे।
Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Jaya Vrindavana Dham Vrindavana Dham Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Srila Gurudev Prandhanahi Srila Jaya Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Radha Vinoda Radha Vinoda Radhe Srila Prabhupada Prandhanahi Srila Prabhupada Prandhanahi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Srila Prabhupada Prandhanahi. Jaya Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Premanandi. हरे कृष्णा। आज का मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी के द्वारा होगा। हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी की। Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. राधा मदन मोहन भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी. Can you keep this fan on third? You know, I don't know why. Srila Prabhupada ki. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha
माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radhe, Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Gauranita, Jai Gauranita. Gaura Gaura Gaurari. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Vishnupada Paramahansa Acharya Sutra Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Everybody founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kusham Giri Govardhana Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai, Mathura Dham Ki Jai, Dwarka Dham Ki Jai, Ramesha Badrinath Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Jagannath Baladev Subhadra Maiya Ki Jai, Mayapur Navdeep Dham Ki Jai, Ganga Mai Jamna Mai Ki Jai, Vrindadev Tulsi Maharani Ki Jai, Anant Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande, all glorious assembled devotees. All glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 10, and the verse number is 18. Shri Bhagavanu Vacha Triya Saptabhi Pita Puta Triya Saptabhi Pita Puta Pitrabe Sahate Anaga Pitrabe Sahate Anaga Yat Sadho Asya Kule Jato Yat Sadho Asya Kule Jato Bhavan Vai Kula Pavana Bhavan Vai Kula Pavana Sri Bhagavanu Vacha Triya Saptabhi Pita Puta Pitrabe Sahate Anaga Yat Sadho Asya Kule Jato Bhavan Vai Kula Pavana.
mothers, word to word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Somebody is speaking? Okay, yes. Word to word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Shri Gaurnitai Bhagavan ki, Shri Radha Madan Mohan Bhagavan ki. Sri Bhagavanu Vacha. The Supreme Personality of God had said, Triya Saptabhi, 7 multiplied by 3. That is to say, 21. Pita, father. Puta, purified. Pitrabhi, with your forefathers. Saha, altogether. Te, your. Anaga, O most sinless personality. Prahlad Maharaj. Yat, because. Sadhu, O great saintly person. Asya, of this person. Kule, in the dynasty. Jata, took birth. Bhavana, Bhavan, you. Why? Indeed, Kulapavana, the purifier of the whole dynasty. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Prahlad, O most pure, O great saintly person, your father has been purified, along with 21 forefathers in your family. Because you were born in this family, the entire dynasty has been purified. सुना आप लोगों ने? अब दोहराएंगे? The Supreme Personality of Godhead said, My dear Prahlad, O most pure, O great saintly person, your father has been purified, along with 21 forefathers in your family. Because you are born in this family, the entire dynasty has been purified. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. The word Triya Saptabhi means 7 multiplied by 3. In one's family, one can count back 4 or 5 generations to one's great-grandfather or even one's great-grandfather's father. But since the Lord mentions 21 forefathers, this indicates that the benediction expands to other families also. Before the present family in which one has taken birth, one must have been born in other families. Thus, when a Vaishnava takes birth in a family, by the grace of Lord, he purifies not only that family, but also the families of his previous births. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurulmitam yenai
तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्महिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। We'd like to welcome all of you to this Sunday program. This happens every Sunday. Those who are new, take the benefit of these programs and help yourself to move forward from human life to furtherance of your spiritual life. This conversation is between the Lord and the devotee. The devotee who is standing in front of the Lord eye to eye. It's not an impersonalist attitude, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भी भगवान और किसी भगवान का कोई रूप नहीं। यहाँ पर बड़े क्लियरली दिख रहा है कि भगवान का भी स्वरूप है और भक्त का भी स्वरूप है। और भक्त की तीव्रता के अंतर्गत जब भक्ति मार्ग में वो संपन्न हो जाता है, भगवान उसे अपने दर्शन से कृतार्थ कर देते हैं। और ये संवाद भक्त और भगवान के बीच में चल रहा है। केवल ये एक श्लोक अध्ययन करने से ही जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसको पता चलना चाहिए कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कर्म और ज्ञान से कितना महत्वपूर्ण है। केवल जिंदगी में हमें केवल भक्त बनना है, और अगर हम कुल में भक्त बन गए तो 21 पीढ़ियां हमारी तर जाएंगी। हाँ, 21 Lord is himself saying it. How much faith you have on the words of the Lord? Who can tell you more than this? Who can make you understand more than this? That the Lord himself is coming and telling the devotee that your 21 generations have been liberated because you have taken birth in this family. नमिशरण के सुंदर वन में
भक्तों का जब संवाद हो रहा है तो वहां पर भी यही दोहराया जाता है कि भक्ति बहुमूल्य है और इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम भगवत भक्ति करें। सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के 10,000 से भी ज्यादा भक्तों के समक्ष ये संबोधना कर रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदोक्षसा। Then it is said, ahituki apratihata yayatma suprasati. This is the supreme occupation of the human life. But are we engaged in the supreme occupation? We are not occupied in the supreme occupation. We are so much engrossed with our first body, which is completely shattering the equilibrium of our human life, when we are completely in Kama, Krodha, Mada, Lobha. The predominance of these three things is not allowing us to execute even devotional service properly. Srila Prabhupada confirms in the purport, because these three impediments on the path of your spiritual life are actually not allowing you to do pure bhakti. While executing devotional service also, you come and clash with the egos. And depriving you from pure bhakti. What to speak of the materialistic people who are completely, from morning till evening, engrossed in the persuasion of gratifying the senses. And this is a completely bad bargain. From morning till evening, they are not pursuing savai pumsam paro dharma. They are pursuing how to gratify their senses, and they are not serving the Supreme Lord. They are engaging these senses. The best of the tools in the human form of a life, they are utilizing these senses, these gadgets, for Atmahanan. Furthermore, degrading their human life. Because this human life has been attained after 84 lakhs of species. And when you get this human form of a life after 84 lakh species, and what are you doing? You are still misusing this actual beautiful gadget given by Lord for bhakti. We are pursuing smaller goals with this beautiful gadget. If somebody gives you a ship which is 100 meters long, would you use that ship for crossing the canal or small stream? No. That whole big ship is given to you so that you can cross the oceans. Lord has given you this beautiful human form of a life. What are you doing with this human form of a life? You are pursuing the same tendencies which even a dog, cat, bird, or a small ant has got. You are pursuing the sex impulses. You are pursuing gratifying the senses. You are indulging in trying to acquire the material things through which you can build comfortable situations.
24 into 7, you are always 365 days. You're trying to make this body comfortable, but you are not utilizing this body for pursuing bhakti. When you note that this bhakti is the prime benediction on the human civilization, and Krishna says very sincerely in the Bhagavad Gita, Bhaktya mam abhijanati. Only devotees can understand me. And while Prahlad Maharaj is conversing with the Supreme Lord, here, what do we see? He says, my dear Prahlad, while you are in this material world, you will exhaust all the reactions of pious activities by feeling happiness, and by acting piously, you will neutralize impious activities. Because of the powerful time factor, you will give up your body. Time factor. But the glories of your activities will be sung in the upper planetary systems. धरती पे अगर आप नहीं रहोगे, मगर आपका गुणगान यशगान देवता लोग भी करते रहेंगे. और ये सतयुग की कहानी है, और हम कलयुग में प्रहलाद महाराज की वाणी की चर्चा कर रहे हैं. और इस चर्चा में हम लोगों का ही हित है. भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं, जो भी ये हमारा कन्वर्सेशन सुनेगा, अध्ययन करेगा और इसको नरेट करेगा, उसका जीवन धन्य है. हाँ? सुनेगा, सुनाएगा और इसको रिपीट करेगा, आपका जीवन धन्य है. Just because our antennas are not up to tune with this instruction, so चलता है. मगर अगर आपके जीवन में संपूर्ण भक्ति अरूज पे है, on the climax, you will get these indications, because this is coming from the Lord Himself. This is not political people. This is not somebody else. This is you, her Supreme Personality of Godhead. And in this, what is Prabhupada is telling us? The word Kaushalya is very important. One should live in the material world very expertly. इस संसार में अगर हमें जीना नहीं आया तो क्या करोगे? हाँ? The material world is known as the world of duality, because one sometimes had to act impiously and sometimes have to be acting piously. इस दुविधा के अंतर्गत हम इस संसार में जी रहे हैं. मगर भगवत भक्ति इतनी तीव्र है, इस डुअलिटी से भी हमको पार करा देती है, सतत अगर हम भगवत भक्ति करते रहेंगे. So what is going to happen then? Although one does not want to act impiously, the world is so fashioned that there is always danger. हर पल पे कुछ न कुछ खतरा है. पदम पदम यत विपदाम. There is always problems. हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है. क्योंकि हमारे चाहने से इस संसार में कुछ होता नहीं है. While you are in a dreaming state, you cannot actually accomplish on real state. If you have dreamed in the night time that you have become king, that doesn't mean that you are going to become king next day. So like that we are thinking, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं. ये मैं की बू जो है हर पल हमारे जीवन में आती रहती है. मगर ये मैं जो है हमारे इस काम का कुछ है नहीं.
Thus, even when performing devotional service, a devotee has to create many enemies. प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब आप भगवत भक्ति भी कर रहे हो, आपको शत्रु पैदा करने होते हैं. If you tell them to do this, he will say, नहीं मैं ऐसा करूंगा. Because tundam matir banne. There are always, everybody is giving their own perspective also into it. But a devotee, when he is properly hearing from the authorities how to execute devotional service, these dualities can be evaporated very nicely. That is why Prabhupada ji is talking about inheriting this transcendental knowledge through parampara. Otherwise, sometimes Jnani can completely dash you, Dhyani can dash you, Yogi can dash you. But if you have heard the importance of bhakti from a parampara, from a right guru, then you will be tatastha. You will be completely, you will be always fixed in your devotional service. So Prabhupada ji is saying, Prahlad Maharaj himself had experience of this, for even his father became his enemy. A devotee should expertly manage to think always of Supreme Lord, so that the reactions of suffering cannot touch him. What does it mean? You see? It means that in your devotional service, you should always keep in mind that you are not to please your own senses. You have to please the Supreme Personality of Godhead. ये करने से जीव का कैसे कल्याण हो सके? तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारे ईगो को नहीं सेटिस्फाई करना है. You have to see how this devotional service can be executed very expertly. And Srila Prabhupada says, this is the expert manager of Papa Punya. Pious and impious things. And an exalted devotee like Prahlad Maharaj is Jivan Mukta. He is liberated soul. We are not liberated soul. Jivan Mukta. Narad Muni is Jivan Mukta. Prahlad Maharaj is Jivan Mukta. Okay? But again, as I said, Lord is telling to Prahlad Maharaj, केवल तुम्हारा और मेरा ये संवाद सुनने से ही जीवों का कल्याण हो सकता. Rest be assured. So this conversation is not a conversation of a Bollywood actor and actress. This is not a conversation between a politician and their subjects. This is the conversation between the Bhakt and Bhagavan. भगवान भक्त को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी ये कीर्ति और यश गान जो सुनेगा उसका सदैव भला होगा. But unfortunately, in the modern times, people are not interested in hearing the Srimad Bhagavatam, Amal Puran. They are interested in hearing movies, seeing movies, hearing mundane songs. They're all completely captivated by the illusory energy of the Lord, and that's why they are doing Atmahanan. They are not progressing on the path of spiritual life. So it is said, while executing devotional service, you will be kushala. You will become parangat. You will become trained to rise above happiness and distress. संपूर्ण रूप से श्रद्धावान भक्त जो है वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं. दुख सुख और शोक से प्रभावित नहीं होते हैं. Okay? And
Prabhupada ji is saying that even if a person is born in a meat-eater family, but executes devotional service very, very nicely, he can become happy in this material world. And this example has been given and shown by none other than Srila Prabhupada, who just gave the Bhakti Sutra to Malachas in the Western world. America, Africa, this, that. How they have got benefited? क्या उनके जीवन में संस्कार थे ऐसे? वो तो मांसाहारी थे, मदिरापान करते थे, मगर उनके जीवन में नारियों में सारी कैसे आ गया? आजकल मॉडर्न इंडिया के नारियों में फटा हुआ जीन आ रहा है, हाँ? और पुरुषों के ऊपर फटा हुआ जीन, जो कि अमेरिका और यूरोप में जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको जो कपड़ा दिया जाता था, वो अभी इंडिया में और उधर फैशन बन गया भाई। आज मैं देख रहा हूं कि आज आप कॉलेजेस में जाइए, महिलाएं, लड़कियां देखिए, वो फटे हुए जीन पहनते थे, नीज के सामने फाड़ देते हैं या फटे हुए मिल जाते हैं। दिस इज कॉस्टिंग $5,000, दिस इज कॉस्टिंग 5,000 rupees, and they are wearing it very nicely. But Srila Prabhupada, the great Vaishnava trained these Westerners to wear the sari and keep the sari on the head. Nowadays, Indian ladies are keeping their long hair and they are walking, and unke muh mein aa gaya cigarette. Now you can see our corporate girls and corporate ladies, when they come out of the lunch break, they will have wonderful cigarette in the mouth. जैसे जेंट्स आते बाहर आते, उनको देखिए आप, BKC में जाइए, उधर जाइए, बाहर देखिए, everybody is smoking and they are thinking they are very great. But Srila Prabhupada converted these meat eaters, beef eaters, into Vaishnava and Vaishnavis, because giving them the Savai Pumsam Paro Dharmo Yatho Bhakti Adokshasa, giving the Vyasadeva Srimad Bhagavatam to them so that they can understand the perfection of life. So it is only possible when a transcendental is imparting the same knowledge to the people. Even if he is degraded, he can become a devotee. That's what Srila Prabhupada is mentioning in the purport. If even a meat eater is there, he can transform. इस सभा में कितने मीट ईटर थे इस्कॉन के आने से पहले? हाथ खड़ा कीजिए, ये देखिए, so many people meat eaters, and still they have got a Vaishnava tilak on the forehead. It's because of the bhakti, chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In this Kali Yuga, you don't have to do so many things. You have to keep on chanting the holy name of the Lord, because your Tukaram is teaching you to chant the holy name of the Lord. Because of your Narsi Bhagat is teaching you to chant the holy name of the Lord. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu is telling, who is non-different from Krishna, he is telling you that what is the perfection of life is to chant the holy name of the Lord. And when we come furthermore, here, in this verse, Prahlad Maharaj is saying, next 17th verse, O Supreme Lord, you are so merciful to the fallen souls. आप पतित उनके ऊपर बड़े दयालु हैं. I ask you only one benediction. I know that my father at the time of his death had already been purified by your. मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी का उद्धार तभी हुआ था जब आपने उन पे अपनी दृष्टिपात कर दिया था. मगर ये तो सच है, जब आपने उनको अपने गोदी में लिया था तो उनका सर्वस्व प्यूरिफाई हो गया था. हाँ, हिरण्याकश्यपु को नरसिंह भगवान ने अपने
जांघे पे बिठाया था, जांघे पे बिठाने के बाद मैं अपने 2 हाथों से, नाखून से उनका पेट चीर फाड़ किया था। ये तो बहुत ही अच्छा है? मगर thus he directly blasphemed your lordship, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपका बहुत कुछ बुरा भला कहा था। Hiranyakashipu had said, because he was very angry that the Lord had killed his brother Hiranyaksh, and he was not knowing that. Why did he kill him? Okay, so you devotee, I wish that he be excused for these. अब प्रहलाद महाराज के भक्त के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। आपने देखा ही होगा कि प्रहलाद के ऊपर कितना अत्याचार अपने बाप ने किया, मगर जब ये मर गए तो प्रहलाद महाराज वो सब याद नहीं किए, बोले आप उन पे कृपा कर लीजिए, आप और उनका उद्धार कर दिए। तब जाके भगवान उसको बोल रहे हैं, अरे भाई, जिस कुल में तेरा जैसा बेटा पैदा होगा उसके 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। So my dear friends, bhakti is not so cheap thing. It can deliver your 21 generations if you do bhakti very nicely. If you simply chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, your life will be delivered and your 21 generations will be delivered. This is coming a word from Bhagavan Vacha. This is not politician Vacha. This is not Abhinetri Vacha. This is not Bollywood actor Vacha. This is Bhagavan Vacha. Not Phalgu Bhagavan, Sai Bhagavan, Puna Bhagavan, this Bhagavan, that Bhagavan. No. Krishnastu Bhagavan स्वयं. ये भगवान के मुखार वृंद से आ रहे हैं कि तुम्हारे 21 जनरेशन का उद्धार हो चुका है। And this gives us a complete conviction that those who are executing devotional service under the guidance of the spiritual master and the Vaishnavas, they should be fully conversant, they should be fully convinced that bhakti is the only ultimate thing in the life which can encounter us with the Supreme Personality of Godhead. It depends upon how much intense your devotional service is, how much intense your Saranagati is, how much intense your Premamai Bhakti is. Premamai Bhakti doesn't mean doing barter system with Bhagavan. You have seen in the previous verses how Prahlad Maharaj is saying that I have not come to do business with you. Bhagavan is wanting to give him everything, but he said that I am not wanting to do business. A true devotee is not asking for anything. Na dhanam, na janam, na sundarim kavitam va jagadish kam. He doesn't want anything from the Lord. That's pure bhakti. He doesn't want anything. He wants to execute devotional service very, very nicely. We have seen from the saintly personalities like Tukaram, we have seen from the saintly life from Prabhupada, they didn't expect anything from the Lord. They executed pure devotional service and wanted to sing the glories of the Lord all over the world. Thus they became wonderful devotees. So what is the symptom of a pure devotional service? You don't become arrogant. You don't become deceit. You don't become cheater. You don't become, sense gratifier. The qualification of a devotee is that if you are trying to do pure bhakti, you see, if you are doing properly bhakti, it can remove your all miseries. Bhakti करने से आपके सभी संताप मिट जाएंगे. This is also coming, from Sukdev Goswami Maharaj to Maharaj Parikshit.
ये नहीं है कि भक्ति में शक्ति नहीं है, भक्ति में ही शक्ति है। और भगवान बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि तस्माद् भरत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मृतव्यस्य चित्यात्मयम्। O descendant of Bharata, one who desires to be free from all miseries, जो भी व्यक्ति संसार के संतापों से मुक्त होना चाहते हैं, must hear about, भगवान हरि के बारे में सदैव कथा सुनना होगा। आप सबको संडे आना होगा, यहाँ अगर बस चले तो हर दिन आना चाहिए, क्योंकि हर दिन यहाँ पर भागवत होता है। जो हर दिन भागवत कथा सुनता है उसके सभी संताप मिट जाते हैं। एंड देन ग्लोरीफाई, what does mean the glorifying? When we are chanting in the holy name of the Lord in the temple, at the time you just don't run away, isn't it? ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, अभी यहाँ पर मैं ये कीर्तन करना सब न्यू भक्तों का काम है। हाँ? जब कीर्तन हो रहा है, यू पुश योर सेल्फ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ? When you push, when there is a kirtan moment going on, you keep on dancing along with it. I have many times told you, when there is a kirtan going on, you don't do anything else. Just push yourself in chanting the holy name of the Lord. At the time, you just don't do the parikrama. Parikrama बाद में भी हो सकता है कि नहीं? Yes or no? अरे सांगा ना तुम्ही, कसा तुम्ही चुप, व्हाट इज द प्रॉब्लम? परिक्रमा तो दिन भर चालू है ना, 1 बजे तक भी है, 4 से लेकर 9 बजे तक परिक्रमा करते रहो। मगर कीर्तन का समय, भक्तों का कीर्तन का समय कितना बजे है? गुरु के चरणों में फूल लगा के कीर्तन में प्रवेश कर दिया। जब तक पसीना पसीना लहू लहान नहीं होते तब तक तुम छोड़ मत देना कीर्तन। मगर हम लोग क्या करते हैं? उसी वक्त मोबाइल आ जाता है, हाँ हाँ मैं हूं ना, यहाँ पर हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, पता चला यहाँ से कीर्तन में से ही निकल रहे हैं। कहाँ जाना है? प्रभु जी वो लग गया। प्रभु जी किधर जाना है? मेरे को 2 लग गया। दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंसमेंट ऑफ योर ओन बॉडी। If you are imbalanced in your body, and your mind is going to play a havoc at the same time. कसा करणार? सगळा टकला का करतो? चलो 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 घर पे चलते, वहां पर सेंट्रल पार्क में बैठ के वहां पर मोबाइल। यस, सो दिस इज माया, because your fickle mind is taking you away from the Lord. It is getting attracted to a friend who is saying, आ जाओ आज हम लोग बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाएंगे। The same time you have got a problem. So my dear friends, this kirtan is not ordinary thing. This kirtan has been brought by the Supreme Lord, Golokera Premadana Hari Nama Sankirtan. He is profusely distributing then, now, and now you become instrumental in going inside this. And mind you will be jumping in the kirtan, your all purities will vanish. Just like Prabhupada ji often said, when you are clapping with the 2 hands, what happens? Wherever there are birds, they just go away. So like that, when you are clapping your 2 hands in front of the Lord, when you are dancing in front of the Lord, all your impurities, abhadraएं दूर हो जाती हैं। यही एक सबसे बड़ा कलयुग का साधन है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ते वनास्ते गतिरनथा। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरे भव भारा। All the people, whether it's a temple commander, whether it's a temple president, whether it's a department head, whether it's a kirtan wala, everybody should push yourself in the kirtan. And this kirtan will purify you.
This kirtan will make your mind very fertile. This kirtan is going to purify your existence. This kirtan is going to purify your senses. And this kirtan is going to allow you to relish the darshan of Lord. The more you purify, the more you see, you will see the Lord very beautiful. And once your bhakti becomes very, very powerful, your Lord will be pleased with you and He will be able to talk to you. Sometimes some devotee says, Prabhu ji, आज तो लग रहा है जैसे मदन मोहन जी मेरे साथ बात कर रहा है ना? कई बार आए, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे लग रहे बहुत भगवान बहुत मेरे को कुछ कह रहे. Yes, He can talk to you. It depends upon your surrender. He can talk to you. It depends upon how you are purified. He can talk to you. He will see how much you are surrendered to me. Like He is speaking to Prahlad Maharaj here, He can speak to you also. So this is the importance of bhakti, my dear friends. And here we see Srila Prabhupada is saying that in some other place, Sutta Goswami again is saying to the Namisharana devotees, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. Janyati Asu Vairagyam Jnanam Cha Yad Ahitukam. By rendering devotional service unto the personality of Godhead, Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment. Sometimes people are worried about it. This second word, detachment. Because ये दो चीजें होती हैं भक्ति करने से, क्या? ज्ञान और वैराग्य. तो लोगों को वहीं से डर स्टार्ट हो जाता है. अगर वैराग्य आ गया तो फिर मैं क्या करूं प्रभु जी, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, है ना? मेरे पिताजी क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे? हाँ. So this gives you detachment. Real bhakti gives you real detachment, and at that time you can leave your job also. Advaita Chaitanya Das, जरा खड़ा रहो, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. कितने अच्छे हो. This is Advaita Chaitanya Das. आप क्या करते थे प्रभु? क्या जॉब करते थे आप? क्या थे आप? IBM माइक्रोसॉफ्ट में थे बाबा. मैं तो इतना नाम भी नहीं सुना बाबा. वहां पर क्या थे? बड़े बड़े बहुत, कैसा, कितना पैसा कमाते थे? हाँ, जरा बताइए ना सब लोग, कितना पैसा कमाते थे? 2 लाख प्लस. बोलता मेरा पैकेज था 2 लाख प्लस पर मंथ. तो ये क्या हो गया, ये सब टकला वकला क्यों बन गया भाई तुम? गुरुजी ने आदेश दिया था. गुरुजी ने आदेश दे दिया, मगर आपने आदेश माना तब तो जब तो आपको कुछ असर हुआ था क्या? वो जरा एक्सपीरियंस बताइए इनको. जब करने से क्या हुआ फिर? जरा बताइए, जब करने के बाद ये क्या हो गया? पहले तो तुम शीशे के सामने खड़ा रहते थे, 2-2 घंटा बाल बना रहे थे. अब सवाल ये है कि अब स्थिति आ गई है कि शीखा भी नहीं बना पा रहे, ये इतने व्यस्त है ये, बिकॉज शीखा भी मैटेड हो चुका है. ये ऐसा क्यों हो रहा? बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? आपका इतना वैराग्य क्यों आ गया? गुरु के सानिध्य में आते हैं तो इन सब चीज़ों का परिवर्तन आता है, भक्तों का संग आता है, ग्रंथ का प्रभुपाद जी का है, कृपा तो प्रभुपाद जी का रहा है. So he says
the mercy of a spiritual master, the association of the devotees, and studying of the Bhagavatam makes you realize that this vairagya is naturally coming to us, and it is not falgu vairagya, it is real vairagya. So that is what this shloka is saying, Vasudeva Bhagavati. Yeah, what you were saying? Say something. ISKCON का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। So, in the initial stage when he was getting packaged, he was not understanding what is going to happen to him. But the compassionate devotees used to feed him prasadam. अरे और खाना, चपाती खाना यार, बहुत अच्छा प्रसाद है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। कभी कभी पनीर का सब्जी भी खाया, महाप्रसाद भी भगवान का खाया। और पता चला कभी कभी इतना महाप्रसाद खा गया तो मंदिर में ही सो गया। और जब पता चला उठा तो पता चला संध्या हो गया, 6-7 बजे। तो बोलते हैं हॉस्टल में अभी जाने नहीं देंगे। तो भक्त ने बोला चल ना इधर ही सो जाना भाई। सो वाइल ये भक्ति के अंग हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स। भक्ति का अंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, किसके हाथ का खाते हैं। अगर ये प्रक्रिया हमारे जीवन में नहीं आएगी, भक्ति के सिम्टम्स पैदा नहीं हो सकते। So it's in Krishna consciousness we see what do we eat, where do we eat, who serves us, who has cooked it, and who is serving us also. When you go to the McDonald's or you go to the Pizza Hut, you don't know the person who has, whether he has taken a bath, whether he is using the hands very clean, what the hell he is doing. And he doesn't know how to offer food to Krishna. But here you are getting prasadam from a devotee who has got 15, 20 years, 40 years of life, of devotional life. He is offering to prasad, bhoga to the Lord, and he is getting prasadam. And out of his compassion, he is feeding the techie, the educated, and any person who comes to the temple. And the moment they take prasadam, purification starts, my dear friends. And that is what is bhakti. Bhakti means amalgamating in your life everything which is conducive for the spiritual advancement of your life. As long as you are on a bodily platform, you cannot understand the symptoms of bhakti. But when you start engaging in devotional service, you will see positive transformation taking place. I see many people sometimes here, when they came many times before, they were completely disgusted. They were not looking even beautiful also. But after they came to Krishna consciousness, their cheeks became red. Yes or no? I am speaking truth or lies? So when they take Krishna Prasadam, they will chant the holy name of the Lord. And when they sit in the Mangalarti, when they get up early in the morning at 4 o'clock, come to Mangalarti at 4:30, Kakada Arti. When they come in the morning, when you use Brahma Muhurta time for your spiritual advancement, Krishna blesses you. He pours you. It is just like if you're a scientist, you can see dew in the morning, isn't it? What time you can see dew on the grass? Morning and evening, isn't it? You cannot see it in the parched, completely daylight. You cannot see. Early in the morning, when you see this dew, like that, when you get up early in the morning, you will also look like a dazzling figure. You don't have to go to Kaya. You don't have to go to apply creams. You don't have to use a special cosmetic person on your face to brighten you. You will become brightened yourself. You will save then also. And if you become purified,
no meat eating, no gambling, no illicit sex, you will become more brighter, more brighter, more brighter, and you will become devotee. And this devotional service can encounter you with the Supreme Personality of Godhead, and you will not have any material hankerings anymore. This is the beauty of this bhakti. And especially when you are hearing these important prasangas of bhakti in your life, and repeated, endeavors and repeated hearing of such prasangas in your life will become purified, and you will also become a wonderful devotee, where you will progress on the path of very spiritual life very nicely and steadily. So here in this, it is the second one is very, very important. Yatra yatra cha mad bhakta prashanta samadharsina sadhava samudacharas te payanti api ka katha. Whenever and wherever there are peaceful, equiposed devotees who are well behaved and decorated with all good qualities, that place and the dynasties there, even if condemned, are purified. जहां पर अच्छे भक्तों का वास होता है, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। यत्र यत्र च मद भक्ता प्रसन्नता समधारिसना साधव समुदाचरस ते पुण्यंत अपि की कटा. जहां पर, wherever there are peaceful, equiposed devotees who are well behaved and decorated with all good qualities, that place and dynasties there, even if condemned, are purified. Why do we go to, what is the birthplace of Tukaram? Dehu. So how many years back he was born? Almost about 400 years, isn't it? But 400 years back, Tukaram was born, still we are going to at his place. This is the word of the Bhagavatam. जहां पर भी भक्त होता है, वो बड़ा स्पेशल होता है, तीर्थ बन जाता है. तुकाराम जी जहां पर पैदा हुए, वहां पर लाखों लोग जाते दर्शन करने के लिए. आपका जन्म कहां हुआ था, वहां पर कितने लोग जाते हैं? मगर there is a chance that when you become a devotee, best devotee, everybody will say, किधर जन्म लिया है? हाँ? तो प्रभुपाद जी के जीवनी के अंतर्गत में ऐसे अनगिनत प्रसंग है जहां पर लाखों लोग जाते हैं. ब्रह्मचारी जाते, बोलता मुझे अमेरिका जाना. किस लिए जाना है? मैं देखना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी ने जो पेड़ के नीचे अकेले कीर्तन किया था, मैं उसमें अपना सर वहां पर नमन कर लूं, ताकि मैं भी प्यूरिफाई हो जाऊं. हाँ? और हम ही लोग नहीं, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने भी वहां पर प्लैक लगा दिया. क्या? His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada started the movement under this tree in Tompkins Square Park. There's a plaque from mayor of that place. Then where Prabhupada ji alighted from the ship in Boston, over there the marine people have established a complete plaque over there, that Srila Prabhupada, when he came in 1965 to America, first time he alighted from the ship, his footprints were here. This is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So, if you become best devotees, you will be the apple of whole world, not your district, not your country, not your place. You will become apple of the eyes of the world. A devotee can become
dearer to the whole citizens of the globe. My dear friends, this is bhakti. He transcends all the barriers of nations. He transcends all the races. He transcends everything. He is completely aligned with the Supreme Personality of God. And that is what it is said, that once you are in the pure bhakti, and then you are transcending to the Supreme Lord. So never undermine the process of bhakti given by the great acharyas. Never undermine the sayings of the Supreme Personality of Godhead, who's convincingly convincing us that bhakti is the ultimate solace for materialistic people. And if you want to transcend the miseries of the material world, just execute your devotional service and chant the holy name of the Lord in an humble state of mind, thinking yourself as a straw on the street, and chant loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. This simple methodology has been brought by the Lord Himself for us to, take us back home, back to Godhead, and let us have the unflinching faith in this holy name. We have seen in the past, the sages have gone back home, back to Godhead. And we also can follow the same trails and go back home, back to Godhead by simply chanting this holy name. And those who are not chanting, I beg you, please engage your tongue in the service of Krishna. And those who are not even knowing how to chant, please catch a devotee so that you can chant. You see? And learn how to chant. And learn how to, glorify the Supreme Lord in association with the devotees. Then you will become stronger, steadier, and fantastic on the path of spiritual life. Whatever you are doing, you will be successful. Even if you are doing a business, you will become successful. Even if you are a student, you will become successful. Even if you are a housewife, you will become successful. If you are a daughter, you will become successful. If you are a son, you will become successful. If you are a businessman, you will become successful. Just chant the holy name of the Lord in an humble state of mind, and you will see all the miseries evaporating as this ashwasan is coming from the Supreme Lord and His pure devotees. Let us engage in proper devotional service, and that is the purpose of this human life. Thank you very much. And any questions or any comments? Hare Krishna, Vaishnavangri Prabhu. Vaishnavangri Prabhu is a very great scholar. Whenever he is lifting the finger, that finger goes towards Krishna directly. And in exchange, he will enlighten us with his question. And let us hear his question. Today you have taken up very important topic of chanting, kirtan. Yes. Kirtan very, very good. So, how we, especially on Sundays, because we are going to Hindu temple, how we make this Sunday kirtan and hearing most effective, more efficient, more vibrant, that we can guide us, order. Very good. That each and every entity within the vicinity, within Jaipur, they should come here and chant. Because I am remembering one of the lectures we have just published in the Back to Godhead, latest maxim, Telugu. Prabhupada was taking objection, even if, okay, I am doing some service in temple, I am serving. He said, no, that is not hearing at all. You have to just sit and hear only. That is not hearing. You cannot say that, okay, I am doing some power jar, and he denied it. He Yeah. is not hearing at all. Yes, inattentive. He is not at all. And he said that if that type of hearing and attention is not there, it will be like a medium home. All is saying, but really, so how do you direct us? My only humble prayer to everybody is
that whenever you are all coming to the temple, just don't make it a, ordinary place in your consciousness. I see most of the Hindus coming to the temple, somebody is with the mobile, somebody is something, but no, you remain focused. And especially it starts from every individual. When I was talking about the kirtan should be vibrant kirtan. When I was suffering in this material world, in the Bollywood, as a producer, director, I had no other business to gratify my senses. But when I used to come to Hare Krishna temple, Juhu, the devotees used to push me in the kirtan. I was in the pant and shirt. I was having the best of the jeans and the best of the shirts of Chiragdeen and everything. But when you used to go into the kirtan, you used to forget who you are. And that kirtan allowed me to purify myself. And with the result, I used to give up my profession at 6 o'clock in the evening. And I used to come for Sandhya Aarti. I didn't worry about what is going to happen to me if I don't work for extra hours till night. I said, I don't want to work after sunset. I want to see that I reach the temple before sunset. And when devotees are chanting, doing kirtan, I must participate in that. That urge should be there. Sometimes you are very kushal in playing mridanga. Sometimes you are kushal in doing kartals. You are very kushal in dancing. Just don't go away. This kirtan is Swayam Sakshat Bhagavan. And this will purify your existence. All the devotees, they try to see that, this person is doing kirtan, let me go somewhere else. That is a disease. Don't allow your mind to fall in that disease whereby you will be deprived from chanting loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. This mantra is not an ordinary mantra. Golokera Premadana Harinama Sankirtan. This is Hare Krishna and Ram. 3 शब्द हैं. ये ऑर्डिनरी शब्द नहीं है. राम कृष्ण हरि, कृष्ण राम हरि. जिस भी समर्पणता से आप इस नाम को गाएंगे, काम तो करने वाला ही है भाई. एग्जाम्पल आपके सामने. हाँ? ये तो काम कर दिया. हाँ? बताइए, है ना? वेरी क्लियर. कोई बॉलीवुड एक्टर आया है क्या हरे कृष्ण मंदिर में? बताओ ना, टकला बना है क्या कोई? I'm just asking you, or any producer, or any director, or any actress, tell me. They cannot come because they have got problem. They live in an artificial world. They are full of egos. They are all under the influence of Maya, and without the influence of sadhus, they can never become devotees. Even if they may be pious souls, but devotee banna, it is not. It's not easy. जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगी, मुख में नाम नहीं आएगा, तब तक इतना पॉसिबल नहीं. बड़े एक टैकी भक्त बन सकता अगर अच्छी तरीके से भगवत भक्ति में आ सकता. डॉक्टर बन सकता, इंजीनियर, सब कोई भक्त बन सकता.
वो डिपेंड करता है कि आप किस समर्पण भाव से इस नाम को लेते हैं और कीर्तन करते हैं। आप सबसे यही निवेदन है मैं कि कृपा करके हफ्ते में एक संडे आ जाता है, सुबह और शाम यहाँ पर अच्छी तरीके से कीर्तन कीजिए, घर मत लौटाइए। उन व्यक्तियों को जो यहाँ पर रेगुलरली आते हैं उनको ये मंत्र चखाने का प्रयास अपनी तरफ से कीजिए। दिस इज व्हाट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल। यू समटाइम्स पीपल से मैं क्या कर सकता हूं, बस इस कीर्तन में खड़े रहिए। Isn't it? जब लोग पैसा देके गाड़ियों में भर भर के एक लीडर को जिता सकते हैं, क्या आप हरि नाम में बैठ के असंख्य लोगों को प्यूरिफाई नहीं कर सकते? इस नाम में शक्ति है, उस काम में कोई शक्ति नहीं। आज लीडर, 5 साल के बाद दूसरा लीडर, आज कोई हीरोइन, कल दूसरा कोई दूसरा, मगर ये जो है आपसे छूटने वाला नहीं है। भक्ति कभी जीव से छूट नहीं सकती है, मरने के पहले भी मरने के बाद भी भक्ति आपका सौगात है, वो आपके साथ रहेगा। बाकी जो भी ये शरीर से संग्रह कर रहे हो वो सब आपसे छूटने वाला है। वो संगी जिनके साथ आप प्रेम कर रहे हो वो भी छूटने वाले हैं। जो पैसा जो कमा कमा के अपने आप को दुर्गति कर रहे हो वो भी नहीं रहने वाला। जो बच्चा जिसको आप सुबह से शाम तक चीटी चैंटिंग करते रहते हो वो भी आपसे छूट जाएगा। मगर क्या रहने वाला है आपके साथ में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शरीर छोड़ने के बाद भी ये आत्मा के साथ में पायलट बन के, पताका बन के आपको भगवत धाम लेके जा सकता है। ये हरि नाम की शक्ति है प्यारो, ये हरि नाम की शक्ति है। इसका पीछे में भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा और आगे भी एग्जाम्पल मिलेगा। अगर आप एग्जाम्पल बनोगे तो आगे वालों को दर्शन दिखाओगे। पीछे वक्त में बहुत लोगों ने हमको दर्शन दिया है। प्रभुपाद जी ने दिया, तुकाराम जी ने दिया, प्रहलाद महाराज ने दिया, ध्रुव महाराज ने दिया। असंख्य वैष्णवों ने अपने इस जीवन को आहुति दे के हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ कर दिया। अब हम सबको मिलके लोगों को दर्शाना है, लोगों को बताना है कि आइए भक्ति मार्ग में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। वैष्णवांगड़ी प्रभु की। Any other question? Anybody? We have a scientist from Baba Atomic Research Center. Please come here, sir. What made you to come to Hare Krishna Mandir, sir? Why did you take Diksha? Why did you leave? Why you are so attracted to bhakti? Please. This is Dr. Mishra. He is from one of the scientists from Baba Atomic Research Center at Trombay. And इनके मुखारबंद से सुनिए कि क्यों वो भक्ति में आ गए। Let me give you the microphone. Thank you, Professor. A very good scholarly person. He is PhD. He is scientist. He writes something very, very fantastically, and he is a very well-known scientist of the world, actually. But looks very simple, isn't it? Over to him. हिंदी में बोले ना, ठीक है। आप लोग जिसमें चाहेंगे मैं बोल सकता हूँ। देखिए, मेरी कोशिश ये बचपन से ये रही है कि मेरे मम्मी खास तौर पे एक मैं कहूँगा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं थी, बट भगवान राम की बहुत ज़्यादा भक्ति थी उनमें। और वो मुझे बचपन से सुनाया करती थी
भगवान राम जी के बारे में, रामायण के बारे में, और ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा वो मुझे प्रेरित करती थी, मुझे कहती थी कि तुम्हारे असली मम्मी पापा वही हैं। तो आज भी मैं दम ठोक के कहता हूँ किसी फोरम मेरे मम्मी पापा तो हमेशा हैं, इटर्नल हैं वो हमेशा। और एक समय ऐसा आया था कि लगभग क्लास 7th के आसपास मुझ में इतना ज़्यादा, जो प्रभु जी कह रहे हैं, पता नहीं भगवान की कृपा थी या संतों की कृपा थी पिछले जन्मों की, तो मुझे डिटैचमेंट इतना हो गया था, मैं चाहता था संन्यास ले लूँ। जब क्लास 7th में था तो एकदम ऑलमोस्ट डिटरमिन्ड हो गया था। तो पापा जी तो बोले कि हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन थोड़ा मेच्योर हो जाओ, समझ लो, क्योंकि किधर जाना है, कहाँ जाना, वो भी तो क्लियरिटी होनी चाहिए तुम्हें। मम्मी बोली कि देखो बेटे, भगवान कृष्ण ने, तब वहाँ से मम्मी जी ने भगवत गीता का उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण ने क्या कही है, अपने धर्म को निभाते हुए भी तुम वही चीज़ पा सकते हो जो तुम संन्यास की सोच रहे हो। तो आप एक काम करो, जब तक भगवत गीता भी पढ़ना शुरू करो और मैं भी बताना शुरू करती हूँ आपको, और कल जाके आपको एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप मेच्योर डिसीजन लेंगे। हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे यदि आप भक्त बनते हैं। तो ये थे मेरे मम्मी पापा। वो चलते चले गया और मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करके सब जितनी भी पढ़ाई करते रहा, और भगवान कहता था भगवान मुझे डायरेक्शन आप देते जाइए। 1988 में फर्स्ट टाइम मैं एजुकेशनल टूर में मुंबई आया। तब मुझे मुंबई में 2 दोस्त हम लोग आए थे और कुछ समझ में नहीं आया था कहाँ जाए। तो मुझे याद है दादर स्टेशन में मैं सामान को रखा, मेरे मन में सबसे पहली भावना आई कहीं भगवान का मंदिर हो और भगवान राम और कृष्ण जी का, तो मैं एक बार दर्शन कराऊँ। इस धरती में पहली बार मैं कदम रखा हूँ। तो सोचिए मेरी मेंटल स्टेट को कि मैं वहाँ पे जाके रखा लगेज रूम में, और मैं अपने दोस्त को बोला यार चल कहीं पे चलते हैं, हम लोग भगवान के मंदिर होके आते हैं। इस धरती में पहला कदम भगवान मंदिर में होनी चाहिए मेरी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा IIT मेरा वो था, IIT मुंबई में मेरा रुकने का बना हुआ था, वो सब मैं बॉदर नहीं किया कहाँ जाना है मुझे। मैं IIT भी कहाँ है मुझे नहीं मालूम, बट मंदिर में ढूंढूंगा पहले। और वो प्रेरणा होती चाहिए। किसी ने बताया कि उधर जुहू बीच के आसपास एक मंदिर है, तो वहाँ से दादर से कुछ नहीं मालूम था, पूछते 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 चले गए जुहू बीच के आसपास। चूँकि जुहू बीच बोला तो जुहू बीच पहुँच गए, क्योंकि कंडक्टर को वही बोला हमने। तो जुहू बीच में जाके हमने बोला यहाँ पे भगवान का कोई मंदिर है, बताए थे, और कहाँ पे है। तो वो बताया कि बहुत अच्छी मंदिर है। मैं बोला भगवान राम जी का या भगवान कृष्ण, दोनों मिलेंगे बोले आपको। यहाँ पे ISKCON का मंदिर है, वहाँ चले जाइए। मैं बोला मेरे लिए तो हो गया बढ़िया। तो मैं पहुँच गया राधा रास बिहारी जी के सामने, और वहाँ पे जो मेरी भाव थी, मुझे लगा भगवान जी कहाँ बुला लिया आप, भगवान जी मुझे पढ़ाई के बाद आपके शरण में बस बुला लीजिए। अब मैं यही चाहूँगा, सिर्फ आपकी शरण में आऊँगा। भगवान जी आप गाइड करो मुझे आगे क्या करना है। तब 1 साल मेरा बाकी था इंजीनियरिंग का। तो बस वो भावना थी। और प्रभुपाद जी को तो एक संत के रूप में ही जाना उस समय, कि उस समय कुछ मालूम नहीं था। हम तो भगवान के लिए आ गए थे और भगवान ने शरणागति दे दी। तो तब से मेरे दिमाग में था कि अब मैं मुंबई का ही अप्लाई करूँगा, कहीं अप्लाई नहीं करूँगा। मैं जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो 20 साल का था, तो 21वां साल मेरा हुआ नहीं था। तो उस समय मेरे प्रोफेसर सब जानते थे कि ये बंदा तो अच्छे से पढ़ाता भी है, तो क्यों ना इसको टीचिंग में रखा जाए। तो बोले कि जब तक तुम 21 साल तो अप्लाई भी नहीं कर सकते तो यही टीचिंग करो। तो मैं निकलते ही मैं फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तीनों को पढ़ाने लग गया। एंड क्योंकि मेरे इवन क्लास टीचर इतने विश्वास रखते थे, मेरी खुद की क्लास को कई बार पढ़ाया हूँ मैं उस समय जब मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग में। तो वो एक अच्छा चीज़ रहा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं चुन के फिर करने लगा, क्योंकि टीचर बोले तुम बेस्ट हो टीचिंग में भी, तो एनीवे कुछ अच्छा नहीं मिलता तो आप टीचिंग में रह जा, लेकिन आपने अपनी चॉइस से जाना। ये मेरे टीचर्स की प्रेरणा थी। तो मैं चुन के सिर्फ मुंबई अप्लाई करता था। मेरे पापा जी की ख्वाहिश थी मैं गवर्नमेंट जॉब में रहूं, क्योंकि चाहते थे गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। तो मैं बोले दोनों कॉम्बिनेशन में ही मैं अप्लाई करता हूं, चलो मुंबई बस, क्योंकि मुझे राधा रास बिहारी के शरण में जाना एक बार डिसाइड हो गया था मेरा, यदि जाना है तो। नहीं तो भगवान यही रखना चाह रहे हैं तो मैं टीचिंग करता रहूँगा। टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन आई से। तो एक पूजा है टीचिंग भी करें तो, यानी अब तो प्रीचिंग में बोलूँगा उसको टीचिंग के बजाय, बट एक पूजा है वो प्रकार से कि ज्ञान को बांटना। तो वहाँ से फिर BARC का मिला मुझे और एयर इंडिया का, दोनों का सिलेक्शन हो गया मेरा। और चूंकि पापा का वो कमिटमेंट पूरा करना था, मुझे ऑफिसर बनना था, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मैं चुन के कर रहा था। अब उसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर आया BARC का,
तो मैं फिर मेरे गुरु तो वहाँ टीचर्स थे, तो मैं टीचर से पूछा, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कि भाई मैं क्या करूँ। तो बोले BRC ज्वाइन कर लो, बेस्ट प्रोफेशन है आपके पास। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड जीता था मैं अपने एक इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में जब कुछ कार्य किया था। तो उस समय RRL भोपाल से भी मेरा ऑफर आ चुका था, मैं प्री फाइनल ईयर में था तब से। बट चूंकि मेरा ये कमिटमेंट भगवान ने सिद्ध कर दिया था कि मुझे जाना है, तो राधा रासबिहारी के चरणों में मैं इसको ज्वाइन नहीं किया, मैं सोचा ही नहीं भोपाल के बारे में। तो एक जॉब मेरे पास ऑलरेडी थी जो सबसे फर्स्ट जॉब था। अभी आपसे ये पूछ रहा है, हाँ प्रभु जी, ये पूरा जर्नी जो आपका कल्मिनेशन हुआ और ये गले में ये 3 कंठी माला आ गई, उसका ज़रा महत्व बताइए, क्योंकि आपकी जर्नी तो बड़ी लंबी है। इसके लिए तो बायोग्राफी होना पड़ेगा और एक दिन संडे को क्लास देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो मगर मेरे को ये बताइए कि ये 3 कंठी माला के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो ज़रा बताइए। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग सब बोलते हैं कि भाई मैंने कहाँ से दूध लाया, कौन सी गाय थी कलर की, फिर वो ये हुआ, मगर हमको आज मलाई खिलाइए आप कि क्योंकि अभी ये जो दूध उबाल के आपके ऊपर जो ये मलाई लगी हुई है मोटी मोटी, वो कैसे आ गई, वो बताइए। इसके बाद मैं भक्तों के सानिध्य में आते चला गया। जुहू मंदिर बहुत रेगुलर रहा था मेरा। प्रभु जी की कृपा रही, महाराज जी की कृपा काफ़ी समय से मेरे रही, उनकी शरण में बैठने का मौका, उनसे सुनने का मौका मिला, और ये सब ने मुझे कहीं न कहीं प्रेरित करते चले गए। अब चूंकि थोड़ा ज्ञान में था तो मुझे बहुत अच्छा समझना था चीज़ों को, क्योंकि डेप्थ में न जाऊं तक तो समझ में नहीं आती थी। बट बाद में सबकी कृपा से, और आज भी मेरे भक्तों और सूरदास प्रभु जी की कृपा से जो कुछ हूँ मैं आज, तो ये जो चीज़ें हैं प्रभु जी आप लोग ही मार्ग दिए मुझे गुरु के शरण के, उनकी महत्ता को। वरना शायद हम महाराज जी होते भी हैं तो हम उतनी महत्ता को समझने के लिए भक्तों का साथ चाहिए और शिक्षा गुरु का एक आशीर्वाद चाहिए, तभी आप समझ पाते हैं कि उनकी महत्ता कितनी ऊंची है। चैतन्य महाप्रभु जी की मूवमेंट को समझने के लिए आपको ये सब की प्रेरणा चाहिए, महाराज जी की कृपा चाहिए, वैसी हमारे प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए, तभी आप चैतन्य महाप्रभु जी की इस मूवमेंट को समझ पाएंगे। इस मूवमेंट में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये प्रभु जी ने जो कहा कॉजलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट, ये ऑटोमेटिक आती है यदि हम कंटिन्यूटी रखें। अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक हो तो गड़बड़ होती है, तभी लाइफ में अप डाउन आएंगी। बट आप यदि डिटर्मिन्ड रहे, जैसे मैंने वो उदाहरण दिया कि मुझे डिटर्मिन्ड हो गया था, एक बार दर्शन के बाद मुझे लगा कि राधा रासबिहारी के शरण में रहना ही है मुझे, नहीं तो वहीं रहूँगा जहाँ हूँ वहीं, वरना नहीं निकलूँगा मैं कहीं भी। तो ये भावना जब एक बार आ जाती है तो इस्कॉन में आपकी, इस्कॉन तो एक मूवमेंट है जो सबको इंक्लूड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस्कॉन कोई रिलीजन है, ये तो भगवान कृष्ण तो हम सबके हैं, इटर्नल गॉड हैं। तो ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, तब लोगों को हम कन्विंस कर पाते हैं। पहले तो खुद को कन्विंस होनी चाहिए, और ये आती है प्योरिफिकेशन से। जब आप कंटिन्यूटी में प्योरिफिकेशन कहते हैं, अब दिल्ली मंदिर में आप जाएंगे, भगवान कृपा है कि मुझे दिल्ली मंदिर कई बार मौका मिलता है दिल्ली जाने का, तो मेरी खास रहती है राधा पार्थसारथी जी के शरण में जाओ। अब तो महाराज जी भी वहाँ रहते हैं अधिकांश टाइम, तो मैं ज़रूर जाता हूँ क्योंकि मुझे महाराज जी के दर्शन का भी कई बार मौका मिल जाता है। वहाँ एक महाराज जी का एक कोटेशन है जो मैं कोट करना चाहूँगा, प्योरिटी इज़ द पावर, वहाँ टंगा हुआ है, हमारे महाराज जी का कोटेशन है। ये मेरे ख्याल से हमारे एक एक रग रग में, रोम रोम में यदि भर ले, हमें भक्ति की ऊंचाई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ उस लाइन को, और मैं चाहूँगा आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे कि प्योरिटी इज़ द पावर। हम न केवल मैं अपने जीवन से दिखा सकूँ, हम सब अपने जीवन से दिखा सकें, ताकि पूरी विश्व को प्रेरणा दे सकें कि इस्कॉन मूवमेंट है क्या। जिस डिफरेंट स्ट्रीम से जो प्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसकी हाईएस्ट जेनिथ पे यदि जाने की कोशिश करें तो इस्कॉन ले जाने की पूरी हमारी परंपरा हमारे पीछे खड़ी है। वहाँ तो कहीं न कहीं ले जाके छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रीम्स कनेक्टेड रहा हूँ
और हूँ भी, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि छूटते नहीं कभी किसी गुरु से। यदि आप सीखे हैं, वो कहीं न कहीं रहते हैं आपके इसमें, तो इसलिए डिनाई भी नहीं करनी चाहिए। बट उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि इस्कॉन में और प्रबल बनो। कोई भी गुरु के ठीक से समझेंगे अब भगवान कृष्ण की भक्ति का लाभ कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई सिर्फ वही बोल के आधा दूर तक रोक देते हैं, इतना ही डिफरेंस है। बट जो पर You know, he also highlighted one point, uninterrupted. Savai pumsam paro dharmo yatho bhakti ahaytuki. So uninterrupted. ये मत सोचिए कि दैट भाई आज आ गया मंदिर में तो फिर बाद में चले गए सेंट्रल पार्क में, दूसरे दिन, चौथे दिन गए नरीमन पॉइंट, पांचवें दिन हो गया, ये सोचेंगे कि ये भक्ति क्यों नहीं मिल रहा है। Uninterrupted. That's why the great Acharya Srila Prabhupada has given us this movement. If you want to keep yourself always in Krishna consciousness, from morning till evening, remain attached to chanting, reading, associating, eating Krishna prasadam. All angas have to be done every day. Just like you take bath every day, you wear fresh clothes, like that you have to see that you continuously chant your mala very nicely, sincerely, and then you will see the difference, how you will progress, uninterrupted. बीच में भक्ति में कोई भी अवरोधक नहीं लाइए या किसी अवरोधक को आने मत दीजिए, तब जाके आप असली भक्ति का रसास्वादन कर पाएंगे। स्वयं जिस तरीके से मिर्ची खाने के बाद आपको तीखा लगता है, रसगुल्ला खाने के बाद आपको मीठा लगता है, इसी तरीके से भक्ति करने के बाद आपको ज्ञान और वैराग्य का रसास्वादन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Samved Prabhu is giving special garland for you. And ये garland उसके लिए था, ये बड़ा ये हमारा दो स्पीकर्स आज हमारे वंडरफुल प्रेरणादायक आप सब लोग कर रहे। So thank you very much and all the blessings, and there's going to be prasadam for all of you, and there's going to be also today the Sunday program will be at 1 o'clock after the Aarti, Rajbhog Aarti, that 1 o'clock till 2 o'clock there'll be, the Pravachan will not be in the temple because there is a lot of construction happening. So we are shifting the afternoon lecture in Anand Vrindavan Hall, and the Prasadam will be also there. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Krishna Krishna